विकास काय आहे तो तेही तेही विकास विकास सकता यही जे महाल है देदली विकास है ने ते आविन पूछे ने ता खबर पड़े का विकास के एक वे एक ना वे तो मते बहुत बहुत नाखी जाक विकास वे ते तुम आखोला है विकास ये महान पूछे ने तुम जिया लाभ देता थियले ता खबर पड़ी ने का विकास है के ना है चूंटणी आली ही ता काय माहौल चले तुम्हा हिंगाम में आम्हा हे काय गोठ्या चालते गोठ्यात मोठे भागे आहे ना आम्ही युवा पिढी आहे ने मोठे भागे आहे ने आप पार्टी ले झाड़ूलू जापुला प्लांट चाली रही है पण कहा वारू चेंजिंग के मतलब में ते दिल्ली में बोहिरी आखन ते ही काय करी दिल्ली में बोहरिया केरा पेन का है लोगों एंड का है का गारंटी सिस्टम जो आप ही के ने या थ्रू लोगों ने એટલે शिक्षित वर्ग भी का है का बेनिफिट मिले है आरोग्य फ्री है शिक्षण फ्री है और महिला भी कई लाभ है बोटो कई जगह आणि तो हो परिवर्तन लावा એટલે केडा लावणारा केडा सरकार बनवणारा सरकार आमे गैरंटी दे दी है केजरीवाल सरकार हूँ आ लोग तीजवेल तूटी पड़ा हा एटले जीवेल लोग हम जिन तूटी पड़ा तीवेल अपने भी जाम पड़े अच्छा એટલે જે કે લોક વિચારતા हाँ जे कि लोग विचारता थे कि आपको एकला से काई ने એટલે लोगों भी समझू यो काई सरकार भाई बदला पड़ी અને ये सरकार लावो तो कदाच आपको आगाड़ी जाता उद्धार वेरी आई हाय डॉक्टर जितेंद्र वसावा तुम बैठे हैं देहवाली दुनिया मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र वसावा और आप देख रहे देहवाली दुनिया हम आज सागबारा तहसील के गोनांबा गांव में है और गोनांबा गांव में क्या हालात है चुनाव के क्या हालात है और लोगों के क्या हालात है ये दोनों मुद्दों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं लोगों के साथ और जहां जहां गांव में जहां जहां लोगों से मिल रहे हैं लोगों ने एक मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन जरूरी है और जैसे गांव की समस्याओं के बारे में अगर बात करें तो गांव में बहुत कम लोगों के पास सब्सिडी के मकान मिले हुए हैं बाकी आप देख रहे हैं ये मेरे पीछे जो जितने भी घर दिखाई दे रहे हैं आपको ये सारे के सारे घर कच्चे हैं और आप ये सोच सकते हैं कि ये जो गांव है इसमें आज भी तकरीबन 400-450 मतदान है और आज तक इस गांव में सरपंच नहीं बन पाया कोई आदमी ये गांव अलग बड़ी एक पंचायत है उस पंचायत के तहत आता है 3 गांव मिल करके ये एक बड़ी पंचायत बनती है तो आज तक गांव में कोई सरपंच नहीं बन पाया इसलिए गांव में जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं पे ज्यादातर काम नहीं हो पाया इसलिए बहुत सारे लोगों के जो प्राइमरी सुविधा है गांव में जो पानी की सुविधा होनी चाहिए रोड रास्तों की सुविधा होनी चाहिए या तो ये सब्सिडियां घर पक्के मिलने चाहिए ये जो संडास बाथरूम जो है उसकी जो व्यवस्थाएं हैं ये सारी चीजें जिस तरह से होनी चाहिए वैसी नहीं है दुकान में કેટલું કમાવી લો છો कई नहीं हमें चाल्या करे से चले करे हाँ ते सरकार ની કઈ સહાય બહાય कई नहीं सहाय भाई કઈ નહીં મળે ना घर बर घर સબસિડી सब्सिडी कई नहीं એવું તમારું રેશન કાર્ડ ને બધું છે કે નહીં છે ને બીપીએલ છે કે એપીએલ આ એપીએલ વાળું છે એપીએલ છે हाँ हाँ તો તમે તો માલદાર કહેવાઓ એ તો હમણાં કરવું પડે બીપીએલ વાળું એટલે એ કોણે કરી આપેલું તમે કરાવેલું કે પછી કોઈ કરી આપેલું ના એ તો એપીએલ વાળું જ છે પણ હમણાં અનાજ બી નથી મળતું ત્યાંથી એટલે ના પણ એપીએલ કોણે કરેલું બીપીએલ પહેલા હતા કે હા બીપીએલ હતા અને પછી તમે કરાવી દીધું નહીં વચ્ચે એપીએલ એ લોકો જ કરાવી દીધેલું એટલે કોણ કરાવી દે હા મશીન જાતે કરી દે કે સરકારના કોઈ हाँ सरकार માંથી सरकार वाला करी दे हाँ सरकार ये जो मनीष भाई है वो 11वीं तक उन्होंने पढ़ाई की है और ये अभी छोटी सी एक दुकान यहाँ खोल के यहाँ बैठते हैं और कुछ रोजगार यहाँ से खुद के लिए कर रहे हैं तो उन्होंने एक बात हमारे सामने रखी है कि जो राशन कार्ड जो होता है वो राशन कार्ड उनका पहले बीपीएल था उसके बाद उनको भी पता नहीं उनके माँ बाप को भी पता नहीं और उस राशन कार्ड को एपीएल कर दिया गया है तो ये कौन कर रहा है ये सवाल जब मैंने पूछा तो उसको भी पता नहीं कौन कर रहा है मैंने पूछा कि मशीन कर देता होगा तो उसको पता नहीं कि मशीन कर देता है कि सरकार कर देती है तो आप सोचिए कि ये कैसी हालात है लोगों की कि वो है तो गरीब पर उसके जो कार्ड है राशन कार्ड वो एपीएल है
અને તું પંચાયતી કોતા કોર્સે છે હે ના અમે પહેલી જે વાર્યા અચ્છા એટલે પહેલી વાર આ ચૂંટાયા હા પહેલી વાર્યા ચૂંટાયા અને સભ્ય હઈ સભ્ય હોય હા તી સભ્યાન કઈ કામે માં મે મિલતે કે ના સભ્યન કાંઈ કેડો દેહે અમે આજકાલ સરપંચ કાંઈ ના બસ સોયા કેરાવી લેતા હા નીંગી જતા હા બસ હોતો જ એ કી હા અને યુ સરકાર તો બદલા આખતા યુ કઈ કામે ગોતે મારું કહા બદલા હઈ બદલુલા એટલે પોયરા કઈ કામે પોયરા ભવિષ્ય અમે આપું તો અમે એક જાતિ નીંગી ગયા હગલા થોડા ઘણા જે પેન પોયરા જો ભવિષ્ય હોય ત્યાં માટે વિચાર કેરા પડે આપણે હે કાંઈ જ ના મિલે હે आज સબસિડી मान आवो आली पेन आज लोग मान दे दी ना अच्छा सभ्य तो तुल भी ना मिली सब सभ्य आए है पूछता है पेना ए क्या आखते का तुम पहला रियान बांधावा हाथी आमु दियो है की हाथी पहला रिया लोग के बांधी ने तो कंप्लीट भी गया है ते भी तियान है ने आज लोग छेल्लो हफ्तो टाक्यो ना तो देखो ये पंचायत का सदस्य है और सदस्य के रूप में उनके जो अनुभव है बहुत अच्छे नहीं है ये खुद पंचायत में सदस्य होने की वजह ये काम मांगते हैं अपने गांव के विकास के कुछ काम मांगते हैं कुछ योजनाएं मांगते हैं पंचायत तहसील प्लेस पे जाके तो उनको बताया जाता है कि पैसे कोई योजना के पैसे नहीं है अभी तो मतलब आपको ये योजना नहीं मिलेगी ऐसा उनको मौखिक तौर पे बताया जाता है और कुछ काम नहीं दिया जाता उनको सदस्य होने के नाते उनके पास एक भी काम नहीं आता ये खुद बोल रहे हैं कि उनकी सब्सिडी खुद की आई थी वो भी आज तक उनके हाथ में नहीं आई है वो सिर्फ कागज पे है ऐसा बोल रहे हैं तो आप सोचिए कि और तीसरा एक मुद्दा जो आया है कि ग्राम सभा का जो पैसा कानून है उसके बारे में भी कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी कुछ पता नहीं है और खास तौर पे जो सदस्य है उनको तो पता होना चाहिए कि ग्राम सभा के जो पावर है उनके तहत जो गांव में काम होने चाहिए वो अगर ग्राम सभा के तहत जो कार्यवाही है उनकी भी उनको जो जानकारी चाहिए वो नहीं होती है तो गांव में कुछ काम विकास के काम नहीं ला पाते तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हर गांव में हर लोगों के हर पंचायत में है विकास ततिया खूब कहो है कि आखता है लेके ऑन पेपर देखा रही हो बाकी प्राइवेट गुजराती गोट कर प्राइवेट गुजराती कई देखा रही है कई रोड शोभा भी नहीं लोग पानी पापा मारता है અને લોક સુગરમ જતા હોય બેડ વે સુગરમ જમા है કામ માટે એટલે मतलब विकास से खाली कागला पे ओनली पेज उपाय है તીપેન કે કી કોબા કે हाँ, ચાલે જમીન चले ना है एक ही मोजरी जाए नहीं की पेटे का कायम थोड़ी मजूरी मिले है हाँ। का कायम मिले खाई हम मिले जमीन जाए तो या है की हां अन काई बीमार पोड़ी अन काई तहा कहाँ जमीन की जाए એટલે सरकारी में जाते हैं सरकारी दवाखाना सरकारी दवाखाना में जाते हैं पैंती काई ना सरवर खेत है है की बराबर ना हां काई ना आना खानगी मुझे खानगी मुझे आना अन काई डाया महा पैसा मोइसा दया महानैन विधवा पेंशन नैन काई ना मिलती तुम विधवा पेंशन मिला जजे हाँ कागले मगले बनावले अगले 3 का 4 वारी भी गई है हाँ बेन काई ना मिलता ना है की कोते कोरे हुई है बेन 1004 मेरी माँ को वालो हेंडो बेलो भाई ते है आमी लोग आज ही लोगों ना अनामा खेतन नहीं है ये 4 पोयरे मायूं के की मोड़े के ये एक बहुत व्यवस्था के लिए सरकार के लिए शर्म की बात है 2004 में दादी विधवा हुई थी और 2004 से आज तक उनको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है और दर्द की बात तो यह है कि उनके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है फिर भी ये एक संघर्षरत जीवन से गुजर रही है मतलब सरकार को शर्मानी चाहिए सरकारी तंत्र को और अपने जनप्रतिनिधियों को भी शर्मानी चाहिए कि ऐसी हालात में लोग जी रहे हैं और लोगों को मतलब कुछ नहीं चाहिए जीने के लिए एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा हो और कुछ आधार हो जिंदगी में कुछ जी जाने के इतना ही लोगों की उम्मीदें रहती है पर ये उम्मीदें भी ये सरकार और जनप्रतिनिधि ऐसी उम्मीदों के ऊपर भी पानी फिर देते हैं तो ये ऐसी जो गांवों की समस्याएं हैं वे हम आप सबके साथ साझा कर रहे हैं आप भी सोचिए इन मुद्दों के ऊपर जमीन बमीन છે કે નહીં જમીન કેટલીક છે 6 એકર 6 એકર પિયત પિયત જ છે ને એવું એટલે સરકારની કોઈ સહાય બહાય મળેલી સહાય પાણી માટે
ચાય વળી આખી મોટર વાળી એટલે મોટર મળેલી ખેતીવાડીની કોઈ વાત તો આપણને લેવો પડે કે એટલે મેં જાણ્યું કે સરકારે કઈ એટલે સરકાર કઈ ના આપ્યો એને કઈ દીધું આપણે આખો વાર આ તું પિયત કે હા કે ના પિયત નહીં કઈ એટલે તો જાતે જ બાઠી લાભ જલ્દી નથી કાંઈ કેમ હા એ આખું કે સરકાર હા ખોમ મસ્ત કામ કર ખોમ મસ્ત કામ દાદા સરકારે કઈ નહીં આવેલું ઘર ભર આવ્યું હે ને પણ હોબે માર પાંગો પાડું પાડો પાંગો પાડે તો એટલે પોંગો બી ના બાંધી આપ્યો ના પાડે તો મન પર કમર દીજે એટલે કઈ ના બાંધી આપ્યો અને માહે આખતે અરે સરકાર આખે 2017 થી જાહેરાત કરેલી 22 આવે તાવ લોગે આખા દેશોમાં ગરીબમાં પાકે પોંગે બનાવી દી की જાહેરાત કરેલી ના હાલો એક ही का હા अरे अपन याद नहीं तुल मिलिए अलग ना फिर अलग नहीं हमें किलो आका हुआ એટલે પેન તો ही કઈ ના પહોંચ્યો फिर अरे तो ताकि सबका साथ सबका विकास है किया के कम तो कम तेल माय आदि लगे सरकार ले ओ सब आ मोडो कायदो है आदिवासी अधिकार है आदिवासी आथुम रही आदिवासी आखे थे कि काई भी योजना मोड़े की तो कायदो तुमने खबर है का पैसा ना वो कायदो बंधारण में तुमने है अधिकार अप्लाई काई ना खबर काई ना खबर है कोते वोरे 60-65 वोरे हुई गए ताऊ ना खबर पड़ा दे पर एक आगे वानु भी ना आख्यो કાઈ તો આપો બહુતા ના આપને કે ડોક તો બિના આતે આપો को પોઈ રે जी जो कई उन्हें जातो वे कि जेल मालूम वे तो जान सकने रो आप बता आदिवासी अधिकार है तो तुमने काई ना खबर अच्छा अधिकार खबर हुई ता ना आप मत काई टाकलू तो खबर पड़ तुमने अधिकार ना खबर अधिकार देखा एक बात जो गोनांबा में हम बुजुर्ग के साथ यहाँ चर्चा कर रहे थे और एक जो मुख्य बात यहाँ निकल के आई है कि ज्यादातर आदिवासी जो 60 और 65 साल की उम्र में है, जैसे बुजुर्ग के साथ हम बात कर रहे थे, तो इस उम्र के लोगों को जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार है, उनका जो फंडामेंटल राइट्स है आदिवासियों का, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। इसलिए ज्यादातर आदिवासी जब भी चुनाव आता है तो अपनी जो बात है, अपने जो मुद्दे हैं, अपने जो सवाल है, उस सवालों को आदिवासी खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। ये बात निकल करके यहाँ आई है। काय नाव है तुम? रैना बेंसन लेखला है का? हां हो कोता एक लगे सातवां लगे साथ में की अन कांटा रूम ने जाता है का? हो जाता है ताकि अनाज मिले है की कोता मिले पातरी किला चोखा देते पावती मावती देते है ना? काय ना पावती काय आकड़ो दाड़पा जाते है का? अंगूठा भी ते दापूत है ना ते अन पावती निंगे ना? आम्ही पावती निघती का ना निघती ते એટલે तुमने हफ्ते ना हां એટલે આમાં ડાયન જાતે હેલા पण पावती तापते वीक ने पावती काय ना मिलती जायना अंगूठा दापिन ली ना उल्लू रे ना अरे पण ते पावती में लेखलो पूरे है कोता किल्ला काय काय मिले तो बाठो तो काही अति पावती ना देते तुम पावती ना देते ना अति ठोगी लेते भी रेस कामी ठोकते के ना तिया तुम रे ना राप तुम थोड़ा रे ना जायना पुकाय अंगूठा दापियो का को तो पैसा लवा आख्या दी दे दा का नजली ना बना रे ना काहे के डो ही कलो रहे तो कहे डो पुचान जा है कांटार वाला का को तो दे दो को कहीं ना कहीं दो कडेला हाख्या तो कहीं जाना रो अच्छा कांटार वाला दबड़ा वाला એટલે આખા જાય તો ગોઠાપુ રેનારી આખનારો ફાટ હા ઓહુ ચારે અમારા અહીંયા આજાલે અને મોમોતી પહેલી વખત આવે ની હુચારે મારતા હી કિરેનારો ना तुमा हिस्ट्री आवती ना तुमा पोयरान हारो शिक्षण मिलतो ना तुमा काई बीमार पड़ो तो काई सरकारी हारी सुविधा दवाखाना मिले ते भी बाठो हारो जाई का અમે સરકાર અટકાઈએ એને બાદામ ગુરુજી લોકો મુદ્દો આયે અને આમાં ગુરુજી આય ને એન્ડો આય કે તું એન્ડો જેન્ડો ગુરુજી મિલે ને આમાં માવતી ઉંમર ગઈ માયો હા ઓપલો કેલે નહીં પોરા અંતરી દેબી પોતે જાઈન બી હાદી લાવે હા એટલે લાગણી વાળો માહો હાય લાગણી વાળો માહો नहीं કામકાજ શું કરતા છે કામકાજ શું કરીએ હવે કોઈ કામકાજ ચાલતું નહીં કશું ના મળે કઈ ધંધો પાણી બી હું ચાલે અહીંયા ગામડામાં કેટલું ભણેલા છે હું 10 એવું શું નામ છે દશરથભાઈ રામદાસભાઈ દશરથભાઈ 10મું ભણેલા છે હા તે નોકરી એ કઈ એમ તેમ કઈ કર્યું જ નહીં કે
નોકરી 10મું ગ્રેજ્યુએટ હોય ને એવી નોકરી નહીં મળતી તો પછી અમે શું વાત છે, સરકાર તો સબકા સાથ સબકા વિકાસ એમ કે છે. તો બોલી જાય બધું. એવું એ બોલે એ બોલ્યા કરે એવું, બાકી કઈ નહીં મેળ પડે. કઈ મેળ નહીં પડે. હે આપણા પોયરાઓનો મેળ પડે કે નહીં? પોયરાઓ ભણે છે, હવે શું થાય જોઈએ. એમનું મેળ પડે એવું લાગે છે કે નહીં પોયરાઓનું, કે એમનું આપણા આપણા જેવું થઈ જાય નક્કી ના કહેવાય તો. ગરીબોનું શું સાંભળે, હવે ગરીબો તો ગરીબો જ. બરાબર. અહીં તાલુકા પર બી નહીં કોઈ સાંભળે, તાલુકા પર બી નહીં સાંભળે કોઈ. કોણ સાંભળે? રાજ્યમાં દેશમાં કોણ સાંભળવા? હા, આગળ જાય નહીં ને પછી અહીં તાલુકા પર જ પૂરું થઈ જાય પછી શું કરવાનું? બરાબર ને. તો પછી અહીંથી 5મા ધોરણ પછી છોકરાઓ ક્યાં ભણવા જાય? બહાર ગામ જાય, હવે જ્યાં સારું પડે, જ્યાં નજીક પડે ત્યાં જાય, જ્યાં સારી સ્કૂલ હોય ત્યાં જાય. એવું કઈ સારી સ્કૂલ છે તમારા તાલુકામાં? તમને તો ખબર હશે કે નહીં કઈ સારી? અમે તો ડેડિયાપાડામાં ભણેલા એટલે અમને નહીં ખબર. તાલુકામાં તો ખબર હશે ને, તમે હવે આટલી ઉંમર થઈ ગઈ છે તો કઈ સારી સ્કૂલ છે તાલુકામાં? એવી જ હોય બધી, આવે શું કરે. એવી છે એવું? તો પછી પોયરાઓ અહીંથી ભણવા જાય તે કઈ તમારે બસ આવે કે નહીં ગામમાં? ગામમાં બસ નહીં આપતી. કેમ? બસ તો આ બાજુ શાકબારા જવું પડે, સેલાંબા જવું પડે. તો પછી પોયરા કેવી રીતે ભણે? ચાલતા જ ને, કઈ રિક્ષામાં જાય, કોઈ ગાડી પર જાય, કોઈ સાયકલ પર જાય. એટલે સાથી આને ગેસ બાટલો માટલો લઈ દો કા? કઈ ના, આમાં ચૂલી પૂરી રાંધતી. ઓ આને સાહેબ સરકાર રાખે કા આમાં યા કે આતા ડોળા અંદલાવી જાય તા યુન ગેસ બાટલા પાએ કે ના આમું કઈ ના, હા ગેસ બાટલા કઈ ના, ચૂલી પૂરી રાંધતી. હા બરાબર પાક્યા ના ને. બરોબર પક્યો નહીં એટલે ખૂબ પાણી પડ્યો તી મેં બાટલું નુકસાન નુકસાન હાથી કઈ વળતર મળતર સરકારી તરફથી કઈ ના, કઈ ના મિલી? સર્વે વાલે માલે આલ લેકના કઈ तो मम्मी हमने काय मालूम है. शेतकरी मोदी देवावे 12,000 वाले हंडे देवावे आम्ही काय कहता है 1-1 इटारो लागवलो आहे आणि खाली दिवाल वाली 2 इटारे लागवे बस. हाँ बस ने थाती 1-1 इटारो हांजा लागवे हाती पासरे હાથી કોતા કોર્સે વીએ એ તો અમે 3-1 વર્ષે વે 3-4 વર્ષે હાથી તું પોતા ખાનગી બનાવવા પડ્યો? ખાનગી બનાવવા પડ્યો કઈ કે. હા એટલે સરકારી ભરોસે નહીં? કઈ નહીં. આપે ગયા તે હંડા જે ખડ્ડો બી નાખો જો દાદા ફચાડી કઈ જ નહીં મિલે. અચ્છા એટલે ખાલી ઉભો હતો જ કી ગયો? એ ઉભો હતો જ કી ગયા બસ. અને તું આ ફોટો પાડલા? આમાં ફોટા પાડીને સોયા કે ના હતી લેખીન હતી લેના ગ્રાન્ડ ઉભી ખાઈ ગયા. અને કેરોસીન કે એવું કઈ હાલતા છે? કેરોસીન કઈ નથી આપતા, કઈ નથી આપતા. કેમ નથી? તો તમને નહીં જોઈએ એટલે નહીં હાલતા હે? ના કે જોયા પણ આપતા નહીં તે, એટલે સરકારે બંધ કરી દીધું? હા ગોદામ વાળા હાલતા નહીં ને. એટલે પહેલા હાલતેલા? પહેલા આપતેલા પણ અમને નહીં આપતા. કેટલાક વર્ષ થયા? हमने 2-3 वर्ष थी से नहीं आपता. तो हम गौनाबा गांव में थे और गौनामा में जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे आए हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं और आप देखते रहिए देहवाली दुनिया और अगले वीडियो के साथ मिलेंगे. तब तक हम